हेलो वर्ल्ड, मैनी पीपल आर वॉचिंग माई वीडियोज़ और अगर आपने डिसाइड किया है अपनी कोडिंग जर्नी स्टार्ट करने का देन दिस वीडियो इज फॉर यू. इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू 6 secrets to be a powerful programmer. So make sure to watch this video till end to get pure and complete knowledge. So let's get started. Hi there, myself Lakshya Namdeo and welcome to my channel. मेरी वीडियोस देखकर बहुत सारे लोग मुझसे सवाल पूछने लगे कि अच्छे प्रोग्रामर कैसे बने, हाउ टू बी अ गुड प्रोग्रामर. सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू 6 सीक्रेट्स दैट एनीवन वोंट टेल यू टू बी अ पावरफुल प्रोग्रामर. I'll be adding this video on my Powerful Coder playlist on my channel, and make sure to watch all these 3 videos of my channel so you get clear view what my channel is all about. So here comes our first secret, practical learning. The most common mistake जो coders करते हैं, they keep on learning theory knowledge and don't practice it. Coding के लिए theory knowledge important है, but practical knowledge necessary है. Coding is all about 90% practicing and only 10% learning. So अगर आपको अच्छा प्रोग्रामर बनना है then you have to keep on practicing your knowledge, keep learning new things and keep practicing it. Here comes our second secret. Consistency is the key to success. Practice coding daily, at least 30 minutes a day. कोडर्स क्या करते हैं, 1 महीने कोडिंग सीख ले एंड 2-3 महीने के लिए फुर्सत. What happens after 2-3 months? The coding habit, the coding knowledge vanishes off. Be consistent in coding and try to be in touch with coding just 30 minutes a day. 30 minutes a day कोडिंग करने से आपके ब्रेन में हैबिट डेवलप होगी and you get better and better day by day in coding. Try to code in calm environment. काम इन्वायरमेंट आपको हेल्प करता है मोर फोकस करने में. ट्राई लिसनिंग टू कोड सूदिंग म्यूजिक्स एंड ट्यून्स, नॉट सॉन्ग्स. लोग क्या करते हैं, गाने चलाकर हेडफोन्स लगाकर कोडिंग करते हैं. गाने के लिरिक्स आपके ब्रेन को थका देते हैं जिसके कारण आप ज़्यादा देर तक कोड नहीं कर सकते एंड यू फील टायर्ड. सो in order to not to feel tired, you have to listen to code soothing musics on YouTube or Spotify and code silently with patience and concentration. Play with the code. I know it sounds funny, but you have to play with the code. Don't just copy and paste from the source where you are learning. Try adding some things, try deleting some things, try to personalize it. नाम चेंज कर दो, फोटोज इमेजेस चेंज कर दो, अपने खुद के कुछ इनोवेटिव एंड क्रिएटिव आइडियाज उसमें डालो. इससे होगा क्या, you will learn faster. What happens when you mix education with little bit of personal touch? It becomes a passionate learning. Write clean code. क्लीन कोड लिखने से मतलब है कि अननेसेसरी वेरिएबल्स मत बनाओ, अननेसेसरी के फंक्शंस मत बनाओ, उतना ही लिखो जितना ज़रूरी है. एंड ट्राई टू यूज़ कॉमेंट्स इन कोडिंग. कॉमेंट्स यूज़ करने से आप जब कोड को वापस रिव्यू करोगे तो यू कैन अंडरस्टैंड इट बेटर. कॉमेंट्स यूज़ करने से आपको ऐसा लगेगा कि आप कोड पढ़ रहे हो किसी और का. सो अगर आप अपना कोड किसी और को देते भी हो पढ़ने के लिए देन इट विल बी ईजियर फॉर हिम और हर to understand the code and execute in his program. Build projects. Building projects not only enhances your coding and programming skills but also enhances your managing and problem solving abilities. Problem solving abilities और coding abilities को mix कर दो, then you are a powerful programmer. These were some 6 secrets which I used while coding and becoming a powerful programmer, and which you can use to be a most powerful programmer, not in the world but in front of your friends and community. Make sure to subscribe to my channel so you don't miss out on any new videos and hit the bell icon for video notifications. अगर आपको किसी भी प्रकार के doubts या questions हैं then you can surely insta DM me on my Insta handle and you can comment down your views on this video. So that's it for today guys. Thank you.